So student, this is lecture 15, and in this lecture we are going to discuss about the your convolution. Okay, convolution, summation and its properties. Okay, summation means now we are talking about the discrete time. Okay, इसलिए यहाँ पे जो यूज किया गया समेशन. ओके, इफ यू रिमेंबर जब हम कंटिन्यूस की बात करते थे तो हम इंटीग्रल पार्ट लेते थे, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग समेशन. सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द discrete time LSI system. Okay, so the structure is same. Structure means the system is same. जो हमारे सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट होता था. Okay, obviously there is some input. So if now we are taking the discrete time, so it will be xn or del n. Okay, if you remember वहां पे क्या होता था xt del t. अब yn होता था हमारा आउटपुट, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द योर xn. ओके, सिस्टम रिस्पॉन्स. और सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता था hn. Okay, so if you are taking the del n impulse, so that will be your LSI system, and जो इसका response है that can be represented by this hn or this form. Okay, so formula is also same. So if you want to calculate the convolution, obviously that is represented by yn xn convolution with hn. xn is your input response कह सकते हैं. If you are using impulse, so del n will be your input. hn is your system response जो system का है, and yn is your output response. So that is output response equal to xn convolution with hn. और क्या होता थी डेफिनेशन, वहां पे होता था इंटीग्रल, यहां पे हम बात करेंगे समेशन की. सो ऑब्वियसली k equal to minus infinity to infinity x of k h and minus k. Okay, or this is the property you can represent in this form also, means you can interchange the x and h. So that is v k equal to minus infinity to infinity x and minus k hk. So this is your convolution property or convolution definition in discrete time. Okay, so as you know कि जो properties हमने पढ़ी थी, okay, जो प्रॉपर्टीज हमने एनालॉग के लिए पढ़ी थी, कंटिन्यूस सिग्नल के लिए पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी डिस्क्रीट के लिए भी क्या होती है वैलिड होती हैं. So just quickly write it down. If I talk about the commutative property, that is your commutative property. So according to this property, xn convolution with hn, you can write it down hn convolution with xn, means you can interchange the x and h. Second one is the your associative property. So according to this क्या होता था कि अगर हमारे पास कैस्केडेड फॉर्म है और उनको कन्वोल्यूशन करना है, लेट्स सी वी हैव h1n and h2n. So you can write it down in this form, xn convolution with h1n convolution with h2n. So this is known as the
associative property. Okay, so the properties are same, only representation is change here. Okay, that is the distributive. Okay, distributive property. So according to this distributed property, if you have in parallel combination of response, means H1n plus H2n. So for this you can write it down, Xn convolution with H1n plus Xn convolution with H2n. Sorry. Okay, and obviously last one, if we are convolution with impulse, impulse function. Okay, so according to this means you have Xn is input and you are convolving with del n, that is your impulse function. So that will be Xn. Okay, so properties are same here. The only change is T to N. वहां पे हम T डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करते हैं. ओके, चलिए लेट्स टेक वन एग्जांपल. इफ यू हैव एग्जांपल्स, ओके, क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो कैसा आएगा. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. And in example, find convolution of two sequences, that is xn equal to 0.8 to the power n un and hn is given 0.3 to the power n un. Okay, now you have to solve this question, means you have to find out the convolution of these two sequences. Okay, so if you remember, xn is input, hn is the system response, and if you want to calculate yn, means output response, so this yn equal to क्या होता था? You have to remember this signal is given in and सैंपल्स के फॉर्म में. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा? समेशन का, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एच एन माइनस के. ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला होता था. यू नो द वैल्यूज, सो यू कैन पुट k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के, मीन्स we are talking about the xn, so you have to put the obviously n की जगह रिप्लेस क्या करना है? k. so 0.8 to the power k uk multiplying with h n minus k. hn is given, so replace n with n minus k, so you can write it down 0.3 की पावर n है तो n माइनस के un है, मीन्स u n minus k. Okay, so you can write it out this one. Now you know, आप जानते हैं uk और un minus k मतलब कहां से कहां वैलिड रहता है. So if here is mentioned uk, here is mentioned un n minus k, so sorry लास्ट टाइम की तरह समेशन कहां से कहां तक वैलिड होगा? एनीवन. ओके, लेट्स जस्ट ओके, आई विल टेल यू. obviously uk is valid from this one, un minus k is valid. Let's see, this is a value. Okay, so यहां से वैलिड होगा, n कोई वैल्यू है, सो बचा गया हमारा दिस पोर्शन. सो दिस मतलब k इक्वल टू 0 टू n and n should be greater than equal to क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि
un मल्टीप्लाई u के मल्टीप्लाई है, सो राइट साइडेड सारा होना चाहिए, मीन्स n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, सो हमारा बचा क्या रिमेनिंग टर्म 0.8 टू द पावर k, 0.3 टू द पावर n माइनस k, यहां पे क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, एंड अदर्स वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा 0 होगा ऑब्वियसली. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जो 0 है उसके बारे में क्या डिस्कशन करना, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फंक्शन. ओके, ये हमें मिल गया. सो इजिली यू कैन सॉल्व दिस फंक्शन. From here you can find out that k equal to 0 to n. Summation is varying from k equal to 0 to n. So easily you can find out that you can take this 0.3 to the power n outside from the summation because this is constant. So 0.3 to the power n हमने बाहर ले लिया. k equal to 0 to n, 0.8 to the power k, 0.3 to the power minus k, और n ग्रेटर देन 0 है. सो चाहे तो आप लास्ट में un से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या अभी कर सकते हैं, इट्स योर विश. सो रादर देन मल्टीप्लाइंग हियर, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, सो जस्ट पुट इट ओवर हियर. और अगर आपको याद रहता है तो you can directly multiply with un at the end of the question. Okay, and you have to mention where to this the solution is valid for n greater than equal to 0. So rather than writing the n greater than equal to 0, you can write it down directly multiplying with un. Okay, anyway, so this is your solution, or you can solve further easily. Okay, summation k equal to 0 to n, 0.8 upon 0.3 to the power k un. Okay, now you know this equation because you have to put k equal to 0 to n value. So 0.3 to the power n, or obviously 0.8 upon 0.3 to the power 0 plus 0.8 upon 0.3 to the power 1 plus 0.8 upon 0.3 to the power 2 and so on. कहाँ तक? When you put this k equal to n, and this is multiplying with un. Okay, now what is this? This is the your GP. Okay, so for GP series, you know summation क्या होता है? That is the if k equal to 1 and a to the power k is given, the summation of this function a r to the power n minus 1 upon r minus 1, where r is your ratio, common ratio. Okay, so अब यहां पे आपको देखना है, it is starting from k equal to 1, but in this series it is starting from power 0. So for if this is you are writing k equal to 0 to n ak, it will be simply r की power n plus 1. एक term और जुड़ गया, so r to the power n plus 1. Now you have to apply this formula over here. Okay, so I'm writing the final step. After that you have to solve 0.3 to the power n (0.8) upon 0.3 to the power n plus 1 minus 1 upon 0.8 upon 0.3 minus 1. Now you have to solve this further. So that will be your answer. Okay, इसको आप easily और आगे तक solve कर सकते हैं. So that will be your answer for convolving these two functions. Okay, in this way you can solve the
this type of question. Now you can see over here that ये जो बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं वो हमें याद होना चाहिए, एपी जेपी जो हमारी यूज हो रही हैं. ओके, सो मैथमेटिक्स play a very important role over here. Okay, so this is your summation property, and one example from this topic based.